Good morning. Am I audible, guys? Good morning, sir. Good morning, all. So my voice is clear to all. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Thank you. Okay. So before jumping on the actual class, have you gone through two time recording, guys? Vijay, Yes, Suma, sir. Yes, sir. Kalpana. No, sir. Why no? Sir, yesterday only I had an interview. From today only I will start and I will cover all the videos, whatever you have done till now. What about Monday to till Thursday? You didn't get the time. सर नहीं सर वो एक्चुअली जो इंटरव्यू था सर उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और ऑफिस किसका में काम किसका इंटरव्यू दे रहे हैं आप? लिनक्स का या कोई नहीं सर लिनक्स का नहीं मतलब हाँ? यही एश्योर सेंटिनल का ही दे रही हूँ और ऑफिस में भी कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे प्रमोशंस एंड ऑल के तो सारी चीजें No, Kalpana, but still you need to take a time to. आई नो सर सर एक्चुअली आई नो मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी है बट लिटरली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और अभी मैं सुबह यही वीडियो देख रही थी आपका क्या करो फिनिश दिस क्लास 30 मिनट निकालो 30 मिनट निकालो दिन के 30 जैसे कि वीडियो जैसे 2 घंटे भी कवर करने ना आपको हाँ 4 दिन में हो जाएगा 30 मिनट इट इज आई थिंक इट इज इजी राइट इतना तो टाइम हम स्पेंड कर ही देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कर देते हैं सर आज से तो मेरे पास है प्रॉपर टाइम है वीकडेज में भी और वीकेंड में भी तो सर मैं आज कल में काफी सारी चीजें फिनिश कर गुड गुड ठीक है चले व्हाट अबाउट भाग्यश्री यस सर मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस गुड चेतन Yes, sir. Hello. हाँ हाँ ओके गाइस तो प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है एनी डाउट्स anyone having any doubts before jumping on the actual session? Yes, no. No, sir. Good. Okay. No, sir. और वो नोट्स का बेनिफिट हो रहा है ना? हाँ Yes, सर sir. वो yes sir. ओके Yes, sir. सो वो मैंने नोट्स अभी आपके क्लासेस स्टार्ट किया पहले कभी करता नहीं था मैं तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स वुड नॉट गेट सम टाइम टू go through the videos at least they would go with the notes. Okay, so guys, I'm caring so much for you because you invest money over here and you are learning. So my ultimately intention is that you must get the job. Okay, and that is how I cared every batch. Means because guys, you're spending 2 hours in a weekend, and you might determine that after completing this course, you might get job, right? That might be your intention, and I am here to help you. So basically, guys, you must, I always insist student, please do the study, please do the videos because I know the situation is very difficult. Sometimes you are busy with your job, you are not getting the time, but this is the right time to some time from in your busy schedule and invest this time in this study because ultimately end of the bottom of the line you would get the job. Okay, and many students get succeed, guys. Linux, AWS, most of the students play, every in a week I would at least receive one message, I got job, and that is, I feel that is my reward. तो यही मैं मतलब सारे स्टूडेंट को फोर्स करते रहता हूँ. सो डोंट फील दैट कि ये हर बार पूछते रहते हैं कि प्रैक्टिस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड Yes, sir. और अभी जब भी आपको टाइम मिलेगा आधा घंटा निकालो गाइस, और ये व्हाट्सएप वगैरह इनसे दूर रहो जब तक आप करियर में सेट नहीं हो जाते ना. जस्ट प्रोहिबिट दिस व्हाट्सएप, सोशल मीडिया. कुछ टाइम वेस्ट मत करो अपने. टाइम इज वेरी important. Okay, so let's jump on. Let me share my screen. सर एक क्वेश्चन था नॉट रिगार्डिंग दिस लिनक्स सर आपको ये सेंटिनल में एक्सपीरियंस है क्या इसमें सेंटिनल माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल सेंटिनल बट किस में एग्जैक्टली मतलब
सर सेंटिनल के अंदर मतलब कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब जो भी है, एनालिटिक रूल, इंसिडेंट, डेटा कनेक्टर, वर्कबुक, ये सारी हाँ, चीजें। थोड़ा बहुत इंसिडेंट वगैरह है तो पता है मुझे। अच्छा, अच्छा, ठीक। कुछ हेल्प लगेगा तो बोलना, ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। फाइन। सो मैंने लिनक्स को बना के रखा है गाइस। आई जस्ट गेट दैट पब्लिक आईपी एंड ओपनिंग माय मोबाइल स्ट्रीम। और कुछ हेल्प लगता है ना गाइस, मैंने बोला था आपको ग्रुप पे डाल दिया करो, मुझे भी टाइम मिलता है तो आई वुड। सर आप ये केक्यूएल वगैरह में क्लासेस नहीं देते क्या? नहीं, मैं फिलहाल तो सी आई एम ओनली टेकिंग 3 क्लासेस। वन इज लिनक्स, सेकंड इज एडब्ल्यूएस, थर्ड इज डेवऑप्स। ओके, ओके ठीक है सर, ओके। ओके, चलो लेट मी गेट मोबाइल स्ट्रीम फर्स्ट। Okay. Guys, today's topic is very important. Please concentrate. ये यूजर एडमिन वगैरह आपके एकदम दिमाग में बैठ गया ना? बेसिक कमांड, यूजर एडमिन गाइस, परमिशन। Yes, sir. कभी भी किसी आपको ना कंफ्यूज करेंगे सी एच मोड का और सी एच ओन का डिफरेंस क्या है। कल गाइस आपको यू विल गेट शॉक। कल एक इंटरव्यू ले रहा था मैं। He has around 7 year experience and he doesn't know what is the difference between CH mode and CH on. बहुत देखो, मैं आपको बताता हूँ, एवरी डे ना वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट लिनक्स के 10-12 इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं और उसमें से हम एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। इतना बेकार प्रॉब्लम है। इस पीपल हैविंग द अपॉर्चुनिटीज, ओके, बट दे वुड नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज। दे हैव द सर्टिफिकेशन बट दे डोंट हैव नॉलेज। और ये आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ गाइस, हमेशा याद रखना। टेक्निकल में कुछ भी पढ़ो, डेटा साइंस पढ़ो, लिनक्स पढ़ो, डेवऑप्स पढ़ो, एडब्ल्यूएस पढ़ो, कुछ भी, ये चीज ऐसा है ना कि सपोज आज आपने कर लिया और 10 दिन के बाद आए ना आप करने को, तो आपको ऐसे ना एकदम यू विल फील स्ट्रेंज। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? आपको है ना एवरीडे कनेक्ट रहना पड़े। तो आपको मैं टिप्स देता हूँ। अगर आपको लिनक्स में इंटरव्यू क्रैक करना है ना, एटलीस्ट ये नोट्स है ना, दिन के 15 मिनट निकालो और सारे कमांड्स एक बार व्यू कर लिया करो सोने से पहले, जब भी टाइम मिलेगा तब। और वो एवरीडे करना है। एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। मतलब लिटरली अगर आपकी शादी भी है ना उस दिन, फिर भी आपको 15 मिनट या 20 मिनट निकालने, जब तक आपको जॉब नहीं लग जाता तब तक। क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये आप करना जरूर, एटलीस्ट एक बार दिन में, कुछ भी हो जाए, देखना आप कितना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, and which is very important topic guys. People would always get confused about the process, but I will make sure that everybody clear the process. Okay, chalo, let me open my pen and we'll understand the process. अब प्रोसेस को समझने से पहले ना हम we will first understand the human process. Human process क्या है guys? See, किसी भी चाइल्ड का क्या होता है? पहले बर्थ होता है, बट गाइस प्लीज समझ लो इसको। इसको चलो चाइल्ड आ गए। To make a child, what would be the prerequisites? Obviously parent guys. Response me. Please be interactive guys. Yes, sir. यस पहले आप पेरेंट्स हैं, फिर वो आप एक चाइल्ड आ गए। जैसे वो चाइल्ड आता है ऑन अर्थ, तो क्या क्या कंज्यूम करता है गाइस? वाटर एयर एयर, फूड, राइट ना गाइस? Yes. यस सर Yes, sir. अब ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेज। ये क्या है? रिसोर्सेज। गाइस में थोड़ा अंडरस्टैंड, जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे ये आपका सर्वर है और यहाँ पे ना आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
जैसे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है गाइस? ओपन होता है, राइट ना? Right. Yes, sir. Yes. जैसे ही ओपन होता है तो उसकी एक क्या होती है, प्रोसेस बाहर निकलती है। देखो, पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी बाकी प्रोसेस चल रही है। जैसे आपकी सिस्टम रनिंग, आपका सिस्टम रनिंग है, सिस्टम रनिंग है, इसलिए आप ये सिस्टम देख रहे हो। और आपने क्या किया, इस वर्ड को डबल क्लिक किया। अब जब डबल क्लिक करोगे तो इसके लिए जो प्रोसेस होगी वो बाहर आएगी गाइस, तभी एप्लीकेशन ओपन होगा। आर यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो प्रोसेस है, ये हो गई क्या, चाइल्ड। और ये सिस्टम रनिंग प्रोसेस इसकी क्या हो गई, पेरेंट्स। Parents. अब मुझे बताओ, जब ये आपका एप्लीकेशन ओपन होगा तो ये कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करेगा? सीपीयू, रैम। आर यू गेटिंग गाइस? अभी कुछ Yes, sir. Storage. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो पेरेंट, चाइल्ड एंड रिसोर्सेज, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? थोड़ा कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो पहले उसको सिंपल तरीके से समझ लो, और फिर आप यही लॉजिक आप इधर इंप्लीमेंट करो, तो आप कभी नहीं बोलोगे, राइट? सो दैट इज व्हाट आई गिव दिस एग्जांपल। फाइन, नाउ तो अभी आपको एक वर्ड बताता हूं, प्रोसेस। सिंपल, प्रोसेस मतलब क्या? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज any application, maybe Microsoft Word, Microsoft Excel, or PowerPoint, your MP3 player. Process is any application which consuming the resources, right? Okay, so basically कौन कौन सी प्रोसेस है? The first is system process. सिस्टम प्रोसेस। और कौन सी प्रोसेस होती है? यूजर प्रोसेस, राइट? देन डेमन प्रोसेस। चलो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। जब भी आप आपका सिस्टम टर्न ऑन करते हो, और जब टर्न ऑन करके वेलकम स्क्रीन आ जाती है, एंड देन वेयर यू मेंशन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही होती है गाइस, all are your system process. कुछ प्रोसेस ऐसी होती है ना जो कभी दिखती ही नहीं, दैट मीन्स जो इट्स रनिंग इन बैकग्राउंड, सच प्रोसेस वी कॉल्ड डेमन प्रोसेस। Okay. User process means if manually, if you are starting something on the server, if you are manually opening Word, this process is called user process. Clear, guys? Response me, please. Yep, sir. Yeah. So, daemon process means the process which is running background. You cannot see that process. You don't know if the process is running or not in the system. You're not aware about it. You're not aware of it, right? The moment you check if the process is really running, the moment you execute the command and you see, hey, process is running. But before that, you would not know if the process is running. If the process is not running, you're not sure if the process is running or not. You don't know about that. Such process we call background process. If the user is starting some application, user is opening some application, executing some application on itself, then this such process we call user process. And if the process which already been running to to keep up live your system, such process we call system process. Okay, so how we can identify कि ये डेमन प्रोसेस है क्या? गाइस, इट्स वेरी सिंपल। जो भी प्रोसेस के लास्ट में डी रहेगा ना, डी,
वो प्रोसेस को हम डेमन प्रोसेस बोलते हैं। तो मतलब एग्जांपल HTTPD, SSHD, SFTPD, VSFTPD, NFSD, guys, network D. Such process you can easily identify these are background process. Why? Because at the end you can find D. Clear, guys? Yes, sir. Clear. Okay. Yes, sir. Now please understand. अभी देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ. Okay. I will prepare the notes as well. No problem. Where is your notes? Okay, I will write it down. Don't worry. Okay. I will write it down over here. Fine. And I will share. Now, please understand. So, first, you need to understand. First, you need to understand कि ये मेरा computer है. इसके अंदर मैंने एक VMware इंस्टॉल किया है. This is my VMware software. This is my desktop system. This is my desktop. Inside the desktop, I install the operating system. Let's consider Windows. Inside the Windows, I installed one virtual box. Inside the virtual box, I installed Linux. Just understand now. और ये आपका, if you turn on your VM, if you turn on your VM, then what will happen? The moment you turn on your VM, then guys, first process which will trigger, that is called systemd. तो पहला प्रोसेस कौन सा चलता है? जैसे आपका सिस्टम ऑन करते हैं तो systemd, and systemd we can call mother of the process. Systemd is the first process started by kernel. तो जैसे आप पावर ऑन करते तो ऑब्वियसली पहले आपका कर्नल चालू होता है, और ये कर्नल, the first process is going to start, that is called systemd process. And systemd is the first process started by kernel. So this is your first process, and we can call this systemd is mother process, because this is the first process we started by kernel. Okay. So if you ever see any one number, you can easily identify that this is my systemd process, because systemd associated with number 1. Clear, guys? Clear. Now, जब systemd start होता है, but to bring up your all the functionality, systemd needs other process to be turned on. systemd फिर बाकी प्रोसेस को स्टार्ट करती है, जैसे kthread है ना, XYZ, कुछ भी आप ऐसे, ये जो प्रोसेस है ये बाकी चालू होती है. तो यहाँ पे समझो, systemd क्या हो गई? पेरेंट. kthread क्या हो गई? systemd की. kthread systemd की क्या हो गई? Child. kthread ने ABC XYZ प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो XYZ का पेरेंट कौन हुआ?
सिस्टम डी और XYZ ने ABC को स्टार्ट किया, तो ABC का XYZ कौन हुआ? पेरेंट Are you getting, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is what you need to understand. Parent, child, that's it. Or people are getting so confused. Okay, सर सिस्टम प्रोसेस एंड डेमन प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली? 1 minute. System D is a daemon process or system process? You may tell me. Guys, I It is last day, so it is explain. demon process. I already explained how you can recognize this daemon process using the D. So which is the system D means which process? It is demon process. Demon. I am Clear? asking how can we sir differentiate between system process and demon process? मतलब उसमें See, क्या अलग no. अलग रहेगा? First is these are system process only because it's starting by system only. Did you start this process? No sir, it is As started a by user, did you start the process? No. So this is not the process. Who is starting this Yes, sir. process? Kernel, and kernel is your Kernel. system. Clear? Okay sir. Clear, guys? Hello, sir. Are you there? Yeah. Hello. Yeah, I'm here only. Do you have any question? Fine. Guys, यहाँ तक clear सबको? Response में. Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. तो parent, child and resources. Clear? यही सीखना है हमें यहाँ पे अभी. सबको clear हो गया? चलो. Now let's go back to the server. The moment I run the command here, PS मतलब process. So I would get that these are the processes running. तो मैंने एक कमांड सिखाया था आपको W. तो W क्या बता रहा है guys? Which TTY I'm on it? PTS 0, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. On PTS 0, you can see these are process ID is running. Did you see these? जब भी मैंने लॉगिन किया था तो sudo कमांड चलाई थी कमांड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी के प्रोसेस है ना? Are you getting? Yes. See, the moment I log in the system, I would get this, right? तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये मेरा bash है, right? Right ना guys? ये shell है ना मेरा? Yes, sir. Yes. bash प्रोसेस. तो जैसे मैंने यहाँ पे su sudo कमांड चलाई, ये su का प्रोसेस, ये sudo का प्रोसेस. जैसे मैंने अभी यहाँ पे ps कमांड चलाई, ps कहीं पे चला यहाँ पे. Did I execute the ps command? Yes, I execute the ps command. ये ps का प्रोसेस. तो ये इतने प्रोसेस करंटली चल रही है. ये कैसे पता चलेगा आपको? If you run ps command, प्रोसेस. Clear guys? Yes, sir. तो इस टर्मिनल पे currently what are the processes are running? These are the processes are running, and this is called your PID. PID means process ID. TTY means terminal. ये जो मेरा शेल है ये किसी टर्मिनल को अटैच है, राइट? कौन से टर्मिनल को अटैच है? 0 टर्मिनल को. और इस 0 टर्मिनल पे इतनी प्रोसेस अभी चल रही है. बट ये प्रोसेस जो नंबर है ये कौन सा है? हाँ, कौन सी कमांड का प्रोसेस है? ये sudo कमांड का प्रोसेस है. ये है, ये कौन सा प्रोसेस है? किसकी कमांड का है? ये su कमांड का है. ये नंबर कौन से प्रोसेस का? अरे ये बैश प्रोसेस का. क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Clear. Now if I execute the command ps minus em, see, if I execute the command ps minus em, guys मैं आपको सारे कमांड दे दूंगा, डोंट वरी, ओके? नोटपैड के अंदर. तो आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कमांड में कैसे मेमोराइज करो, दैट यू डू नॉट नीड टू वरी. सो जस्ट अंडरस्टैंड कौन सा प्रोसेस चालू हुआ है पहला? System D. System D.
किसने चालू किया ये प्रोसेस? कर्नल ने। कर्नल। उसे यूजर ने चालू किया। root user इस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी क्या है? 1 इस प्रोसेस को किसी ने चालू किया है? कर्नल ने चालू किया है, इसलिए यहाँ पे इसका 0 आ रहा है। पीपीआईडी, पीआईडी मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी। क्लियर गाइस? यस सर। yes sir ओके सी, तो ये Yeah. टाइमिंग है एंड ये किसी टर्मिनल पे अटैच है क्या? 0 1 2 3 4 किसी पे attach? no तो ये no sir इसको क्या बोलोगे आप? बैकग्राउंड प्रोसेस। और बैकग्राउंड प्रोसेस को ढूंढने के लिए लास्ट में क्या देखोगे? D क्लियर गाइस? यस सर। yes sir ओके चलो, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। जैसे मेरा सिस्टम डी प्रोसेस चालू हुआ, उसके साथ मेरा बाद में K-thread D भी चालू हो गया। चलो K-thread D और सिस्टम डी दोनों एक साथ में चालू हुए। अब देखना, ये जो K-thread D को लगा होगा कि मुझे इसको प्रॉपर फंक्शन होने के लिए कुछ और प्रोसेस की जरूरत होगी, तो उसने क्या किया? आरपीसी जीपी को स्टार्ट कर दिया। अब आरपीसी जीपी का नंबर क्या है? 3, बट इसका पेरेंट कौन है? 2, और 2 कौन है एग्जैक्टली? K thread मतलब थर्ड नंबर के प्रोसेस को स्टार्ट किसने किया? second number के process में एग्जैक्टली तो सेकेंड नंबर प्रोसेस क्या हो गया थर्ड नंबर प्रोसेस का? parent, parent थर्ड नंबर प्रोसेस क्या हो गई? child, सेकेंड नंबर की चाइल्ड। ये समझ में आ रहा है? यस सर। yes, अभी देखो Yes. 4 नंबर की प्रोसेस को किसने चालू किया है? K-thread D ने। 6 नंबर की प्रोसेस को K-thread D ने। तो ये सारे प्रोसेस देखो, यहाँ तक नीचे तक जाओ, नीचे तक ये देखो K-thread D ने चालू किया। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। ओके अब देखो ये किसने चालू किया? ये 519 सिस्टम डी। वेरी गुड। तो ये इसका 519 का पेरेंट कौन है यहाँ पे? system D process हाँ क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है अभी? देखो फिर Yes, उसके बाद आपका 608 प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बट ये 608 प्रोसेस का पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है 603, मतलब ये देखो ये डी बस, और इस डी बस ने क्या चालू किया? 608 को। क्लियर गाइस, थोड़ा समझ में आ रहा है? yes यस sir सर। yes, sir. इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो कितना इजी है। 3 चीजें हैं, पेरेंट, चाइल्ड एंड रिसोर्सेस। ये सारी प्रोसेस किसको कंज्यूम कर रही है? आपके सिस्टम के रिसोर्सेस को। और आपके सिस्टम के रिसोर्सेस कौन कौन है? सीपीयू, रैम, नेटवर्क, हार्ड डिस्क, राइट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. इजी है गाइस? yes sir इजी है। चल देखो अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते। टीएस माइनस ईएफ का ही टीएस हाइपन AUX कमांड है। AUX। अब देखो सिस्टम की प्रोसेस किसने चालू की? यूजर कौन है उसका? रूट। सिस्टम Root. का पीआईडी कौन है? 1। सिस्टम डी प्रोसेस सीपीयू कितना यूटिलाइज कर रही है? 0.0%। सिस्टम डी मेमोरी कितना यूटिलाइज कर रही है? 1.5%। सिस्टम डी को VSZ, मतलब VSZ होता है गाइस वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, दैट इज द मैक्सिमम प्रोसेस कैन क्लेम। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब ना पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सिस्टम डी प्रोसेस है ना, ये तो रूट ने चलाई थी। इसका पीआईडी 1 है, प्रोसेस आईडी। सिस्टम डी अभी तो कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रही है, सीपीयू यूज नहीं कर रही है, मेमोरी 1.5% यूज कर रही है। और ये सिस्टम डी को ना मेरे सीपीयू ने इतना वर्चुअल मेमोरी अलोकेट करके दिया है, बट इसमें से RSS मतलब एक्चुअल वर्चुअल मेमोरी इतना इसका यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग गाइस? मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ VSZ का। देखो गाइस, आई होप एवरीबडी नोज, एवरीवन नोज हाउ टू राइड द बाइक्स, राइट? तो अगर आपके पास बाइक होगी तो उसका एक स्पीडोमीटर होगा। अब उस स्पीडोमीटर पे क्या लिखा होता है? 20,
40, 60, 80, 100, 120, and 140. Guys, please understand. And suppose this is the speedometer. Okay. Now, so guys, so just let me know if when you riding your bike, you always directly going on 140? No, sir. No. No, sir. Even in your entire life, you never reach 140, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. Well, this is maximum allocating. So maximum allocating is like VSZ, right? Max to max. Are you getting, guys? Max to max. But when you actually riding the bike, you are almost consuming till 60. And that is called your RSS. Are you getting, guys, now? That is called your RSS. This one. So CPU provided this much of virtual memory, but actual system D utilizing only 15300. Are you getting now? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Okay, fine. Here, guys, you can see as sleeping process, inactive process. So, guys, if I want to know more detail about the switch, then simple. What you are going to do, you simply run man PS. See, always understand. If you want to become a very expert in Linux, always use manual page with that command. So it will provide you a lot of information. So PS is a process snapshot of process. See, example. You see every process on the system using the syntax PS minus E, PS minus E, PS minus E, capital F, PS minus ELY. You see process on the system using PS minus AX, PS minus UX. Can you see this, guys? Can you see this? To see Yes. process running as a root, PS hyphen capital U, root hyphen U, root U. You will only see the process which are consuming by root. You getting me? Yes, sir. तो आपको ये थोड़ा practice भी करना होगा, right? See, the moment you type PS minus capital A, select all the process. PS minus small a, select all the process. PS minus D. So guys, see all the switches is there. All the switches. You don't need to go in depth, but suppose if you want to enhance your knowledge, yes, you need to go in. So here, if I go down, see it? If you see R means running the process. If you see idle kernel thread. If you see D is uninterruptible sleep. This is the let's say T, stop by job control. That means these are the signals you are getting. If there is a plus, क्या होता है? L क्या होता है? Basically, you will get it everything, guys. You need to just go through it. Okay, fine. So, okay, fine. Please go on, you guys. Okay. So now please understand. So if I run the command ps minus aux, you know the process, how you can recognize. You also understand what is the PID, what is the PPID, what is the consuming the process, what is the child, which is the first process starting. Okay. Now, guys, now understand.
Suppose I'm going to talk about the real time now. Let's say you're working as a Linux administrator, and suppose you got one incident. Application running very slowly. Please check. So what you're going to do? You simply run the command top. Top is the tool to see all the process information. टॉप कमांड चलाया आपने, टॉप में आपको क्या दिखेगा? पहले सिस्टम कब से चल रहा है, क्लियर? मेरा सिस्टम कब से चल रहा है? अप है मेरा, कब से अप है? ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया उसको। कितने यूजर लॉग इन है? अभी एक यूजर है। लोड एवरेज सबको पता है गाइस? रिस्पॉन्स मी। Yes, sir. Yes, sir. राइट, हाँ। टोटल टास्क कितना चल रहा है? 96 टोटल टास्क चल रहा है। ये एक उसमें रनिंग है, 94 सो गए हैं, स्लीपिंग, 0 स्टॉप है, 0 ज़ोंबी है। मैं बताऊंगा ज़ोंबी क्या होता है। सीपीयू कितना यूज कर रहा है? यूजर कितना यूज कर रहा है सीपीयू को? कुछ भी नहीं। सिस्टम कितना यूज कर रहा है सीपीयू को? कुछ भी नहीं। ये नाइस। अभी खाली कितना पड़ा है? आइडल मतलब खाली। क्लियर गाइस? ID stand for idle. 100%, 99.3% खाली है। Are you getting guys? Yes, sir. 100% खाली पड़ा है, मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अगर आपको किसी ने इंसिडेंट डाला, माई सिस्टम इज वेरी स्लो, पहले आप क्या देखोगे? अरे मेरा सिस्टम कितना खाली है? ए भाई 99% खाली है। देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। यू कैन चेक अदर CPU, I don't find anything. Clear? Clear? Yes, sir. But suppose, let's consider you can see any application process which is running, which is consuming almost 90% CPU. आप क्या बोलोगे? There is a process which is already been consuming 90% CPU. Please take action on it. You cannot. As a Linux engineer, you can identify the root cause why the system is getting slow. You need to find out the root cause, but you cannot able to take the action. You cannot kill that process. Might be that process is very important. There might be that process is associated with the application. An application is currently live. All the user are accessing that application. You cannot kill. You cannot touch that process until and unless you would get the confirmation from the application team. Is that clear? Yes, sir. You cannot touch. You can only finding the cause. So suppose if I get a ticket and if they are saying that application is very slow, and let's consider that they are using their MongoDB application, and I found that MongoDB using the 95% CPU, I simply write email to them. Hey user, I gone through my system health check and I found that 95% MongoDB is utilizing or consuming the 95% process. You alone MongoDB application. Please restart or please take action on this. And then suppose if they reverted you that, hey Rahul, yeah, I understood that this process is running, but currently my application got completely stuck. Please help me to restart. If I get the confirmation, I can only restart. Without confirmation, I never ever touch anything. Clear? Yes, sir. Kabhi bhi, do you understand why the means if you go in IT or if you are searching the job in IT, why they are not hiring the fresher people? Do you know? Because they don't want to take any risk. Are you getting me now? Because if they hire fresher people with very less salary, and suppose if they are working on production server, and suppose let's say the scenario occurred same as I explained, and suppose if there is a process which is running so much consuming, and suppose if they find, since they are fresher, and if they kill the process, what will happen? There is a big loss of business.
Response me. Yes, sir. So that is what nobody Yes, sir. take the pressure people. Why? Because they are not understand the seriousness. They don't understand or they don't know what would be the significant impact if they did such thing. Clear, guys? So that is what everybody is looking for, experienced people, and that is what experienced people getting so much package. Why? Because they are very sensible in every situation and they can take the action according to pros and cons. Clear? Yes, sir. And that is what you are here understanding this is that is what I said, real time. ये छोटी छोटी चीजें होती मैं बताऊंगा. काम नहीं किया तो चलेगा, एक बात ध्यान में रखना, काम नहीं किया तो चलेगा, बट गलत काम करके फायर हो जाओगे. क्लियर? Yes, sir. तो बहुत प्रिकॉशन लेना, ठीक है? मतलब कमांड पता है मुझे किल का, चलो मैं किल कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है. क्लियर? Yes, sir. और ये जो कमांड विमांड है ना, Yes, घर पे मिल जाती है, इसका टेंशन नहीं. आप यहाँ पे वो कमांड सीखने के लिए आए नहीं हो, वो कमांड ही है कि तो गूगल पे जाओ, सारे मिल जाएंगे. यहाँ पे ये आपको ये समझना है कि आपको काम कैसे करना है. क्लियर? Yes, sir. ओके. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड. सो टॉप. तो मुझे पीएस बीएस कमांड की तो जरूरत ही नहीं है. मैं सीधा, अगर मुझे मेरे सपोज डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, मरीज का हाथ देखता है, फिर वो देखता है कि इसका पल्स कितना चल रहा है. राइट? आपको यहाँ पे वो ये भी मरीज है, आपको सिर्फ टॉप कमांड मारनी है और आपको देखना है. क्लियर? क्लियर गाइस? मेरी मेमोरी कितनी है, yes, sir. टोटल है, कितनी प्री है, कितनी यूज है, कितनी बफर है, कितना स्वैप है. हाँ? ये मेरी प्रोसेस है, किसने चलाई है, इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा. इसको प्रोसेस आईडी क्या है, इसकी वर्चुअल एक्चुअल मेमोरी कितना यूटिलाइज कर रहा है, इसकी मेमोरी शेयर्ड कितनी है, ये स्लीपिंग है. राइट? ये देखो गाइस, आर मतलब रनिंग प्रोसेस, एस मतलब स्लीपिंग प्रोसेस, सीपी, ये देखो ये मेरा रनिंग प्रोसेस है, अभी आर आया था. ये कितना सीपी यूटिलाइज कर रहा है, देखो आर प्रोसेस आर. ये मेमोरी कितना कर रहा है, ये कब चालू हुआ है, तक एग्जैक्ट कमांड क्या है. सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. क्लियर गाइस? टॉप कमांड इज क्लियर? रिस्पॉन्स में प्लीज. Yes, sir. चलो अब Yes. डिस्कस करते हैं. अब देखो, किसी ने पूछा आपको, हे राहुल व्हाट इज द ज़ोंबी प्रोसेस. अब मुझे बताओ ज़ोंबी मतलब क्या गाइस, मतलब ज़ोंबी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, इसे पूछ रहा हूं मैं. ज़ोंबी प्रोसेस मतलब क्या? Sir, virus malicious activity. Like it is not running or not completely turned off. और मुझे सिंपल मीनिंग चाहिए गाइस. Okay, not dead and not live. ओके ओके. मॉन्स्टर काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट? तो ज़ोंबी गेम खेलते हो क्या आप? वो ज़ोंबी होता है, देखो वो किल करना होता है ना उनको, फाइंड आउट कर करके. हैव यू एवर प्ले? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. गाइस ज़ोंबी मतलब, चलो देखो मैं ना आपको सिंपल सा बता दूं. जैसे कि ना प्रोसेस को मैं किल कर सकता हूँ. right? अब देखो सिंपल है गाइस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड हियर. Okay, I'm going to take one more session, guys. User and RAM. आपको पता है ना guys ये? Hello, Yes, sir. पता है. पता है right? So user add RAM, and if I log in CSU, if I want to take RAM, right? So basically what I'm going to do, SU hyphen RAM. Okay, fine. So RAM is already logged in here. How to check ID? RAM user is login. Okay, fine. Just 1 minute.
Guys, give me 1 minute. There is some issue, P1 issue. Server is down. Just give me 5 minutes, okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So guys, suppose what I'm going to take, I will going to take the duplicate session. Please understand. And if you run the command W, guys, okay. So if I run the command top here, and suppose RAM user executing the top command here. Guys, understand, RAM user has executed the top command and I'm a EC2 user. Okay. If I just run the command top and let's say my RAM user also executing the top command, or let's consider my RAM user executing something like or let's say my RAM user executing. 1 minute, guys. Okay. So basically, if I run the command tty, so tty0 is there. Okay, I could say in simple way, guys. Okay, just give me 1 minute. So what I'm going to do, okay, give me 1 minute. I can tell you later on, okay? etc ssh deconfig. I'm going to tell you later, okay? Right now, just ignore this.
Okay, so basically my RAM is login, right? So if I run the command top, my RAM user already been login, guys. And if I run the command W, you can say, guys, RAM is already login. Can you see this? Hello. Yes, sir. Yes, sir. RAM is already login, right? So if Yes. I run the command W, my RAM is already login. And RAM is login with the PTS2. That means second terminal, right? And RAM using the bash process here. Fine. So guys, you can understand if you run the command W now, even you can understand what are the other users are logging. Okay. But now we need to understand, suppose if you want to kill any process. So what I'm going to do, I'm install one application. So how to install the application, that will be learning later. But now you just understand, using the yum command, you can install any package. The yum install HTTPD. So I'm going to installing one HTTPD application. Okay. Yum install HTTPD. So basically my application has been installed. And if I run the command systemctl status HTTPD, you can see application is installed, but this application is inactive, right, guys? Right? So you need to start the You application. need to start that application. Right. So systemctl start HTTPD. So now, after executing this command, if I want to check the status again, I can see my application is running. Clear, guys? Yes. Yes, sir. But if I run the command top, in top command, guys, even you can get that detail. Here, 1 minute. Or suppose now your application is running HTTPD, okay, but you do not know what is the process of that application. So you know that HTTPD. So if you run the command PID of HTTPD, even you will get to know what are the process are associated with my application. Can you get this? So what is the command PID of? If you run the command PID of and your application name, what are the process are associated with that application, you can see that process. Clear, guys? Clear? Yes, sir. Simple. See, sometime what happened if you are unable to find out the PID number, right? Because PID number is very important. Suppose if you want to kill any process. So in that case, even you will get the number using the name of your application. So, but for that, you need to execute the command PID of, right? So now I got the application. So now, suppose guys, you want to kill the process. You want to kill the process. So here, which is the lower number? $28. Which is the, tell me the entire number? 110. 11028. Okay, clear. So if you kill the process, kill 11028. You kill the process. If you check the application again, systemctl status HTTPD, your application is dead, guys. Yes, sir. It's Yes, dead. sir. But you kill the process. Now please understand. You kill the process, kill command. So this kill we called as sure shot killing. मतलब सीधा ब्रेन पे गोली मारो, है ना? सीधा किसी के हेड पे गोली मार दिया, वो जगह पे मर जाएगा. That is called kill. Kill. If you just execute the kill and the process number, that is called sure shot killing. Okay, understand? This is not the graceful killing, sure shot killing. And suppose if you want to kill gracefully, okay, so you can use kill -15 and the process number. So that is called graceful killing. So please understand, I'm going back to the zombie process. Now, suppose your application is running,
application is running. Your HTTP application is running, and all the user are accessing this application. So the moment you execute the kill command, kill, and let's say process number of this. So what exactly it does? It throw the bomb like that. And all the process, whatever the whichever the process are running, all are the kill at the same time. But here, some of the child process still alive. Some of the child process still alive. In this bomb spot, some of the child are still alive. Is there any use of this child? Response me. Is there any use? Because application is already been. No, sir. No, right? And this Right. child is still using your resources. What are the resources? CPU, RAM. And this process we called so zombie process means whose parents died, but child is still running and unnecessary utilizing the resources. So this process we called zombie process. Clear, guys? So Yes, sir. नहीं है और जिंदा भी नहीं है. Clear? Yes, sir. You got this example? Now, Yes. please understand one more example. If you run the command kill -15 and HTTPD, this is called graceful killing. So if you include the -15 is called graceful killing number. Okay. So what happened? If you execute kill -15, so it provide the signal to application, hey application, you will be die soon. So he would get that notification. So HTTP application, what it does, it says his child, hey child, we are going to die soon. Please complete your process. Whatever you are working, no, just complete that immediately. And then it will get die. But if you go with the kill -15, there are very less chance, or there won't be any chance to, that zombie process won't be occurred if you go with this killing. Clear, guys? So which is the good killing? Sure shot killing or graceful killing? Hello? Yes, sir. Which is the good killing? Sure shot killing or graceful killing? Graceful. graceful killing. Q? Why it is important graceful killing? So there will be no chances of zombie process. To Very good. remain. And even it is good, no? Means like your application also, it won't get crash, right? No? Because all the process tasks would get completed before they die, right? Yes, sir. Yes, sir. So that is what the graceful killing is. Guys, यही होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, आपको पूछते हैं अरे ज़ोंबी प्रोसेस क्यों आता है, राइट? ग्रेसफुल किलिंग क्या होता है, राइट? और किल करोगे तो क्या कमांड चलाओगे? सो यू ऑलवेज से आई विल ऑलवेज यूज किल -15. तो पूछेगा क्यों, व्हाई कांट यूज किल ओनली? यू कैन यूज ना किल ओनली. Why do you want to include -15? You say no. If I just use kill, then there will be a chance to create the zombie process. इतना भी बोला तो उससे क्या पता चलता है guys कि you are an experienced person. Are you getting me? Yes, sir. You know the pros and cons. So that is very important. Okay, fine. So chalo, I'm telling you another scenario. Suppose guys, I'm starting my application. Systemctl start HTTPD. Systemctl status HTTPD.
मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, राइट, माई एप्लीकेशन इज रनिंग, but I do not know, I'm very dumb, I don't know which is the process associated with the HTTPD, but I want to kill that process, but I'm very dumb, I cannot able to identify, I don't know the PID of command. Even I'm not understanding this is the process number. No, I'm so dumb, but I want to kill this HTTPD. So guys, there is another way. You simply use pkill. If you use the pkill with the name of application, pkill HTTPD, it got killed. Are you getting me, guys? Yes, sir. See, your application is bad, but you simply use pkill. Clear, guys? Pkill and process name. So agar kabhi suppose if you want to killing with number, you use kill. If you want to killing with name of the process, you use P for process, name, kill for Pkill. clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये भी आपके पास ऑप्शन है. इट्स नाइट कि अरे मेरे पास तो प्रोसेस नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे किल करूं? डोंट वरी, यू कैन यूज द पी किल. फाइन. नाउ suppose guys, whenever you start the process, right, you will get a different PID. So this is very important point. Okay, so suppose systemctl status HTTPD. My application is still dead, inactive. Let me start this. Systemctl start TPD, systemctl status HTTPD. My application is alive, running. And what is the process ID? Process ID is 11498. Suppose I got a request, hey, please restart my application. What I'm going to do? Systemctl restart HTTPD. The moment I execute this command and the moment I check the status of the process, and if the moment I check the number, guys, did you identify number got changed? 11720. Yes, sir. Your number Yes, was sir. 11498. So what you understood? If you go with restarting the application, then what would happen? You are killing the process and new process start and with the new process number, right? Yes. But in that case, what happened? In that case, if the users are connecting with the application, and if you execute the restart, what exactly it does? It will get disconnected, guys. It will get disconnected. Response me. Yes, sir. So in that case, instead of restart, you use a reload. Systemctl. See, what is the process number now? 11720. Reload HTTPD. Systemctl status. You can understand the number was 11720. And what is the number now? Same number? Yes, sir. No, sir. Same number? 11720, earlier also 11720. So which one you prefer? Restart or reload? Reload. Reload. Reload, sir. Reload, sir. Why? Exactly. So guys, suppose in case if you get a question, hey, suppose if you get a request to restart the application, so which command you can use? So always say no. Talk like experienced guy. No, I will not use restart. Show some care. No, I will not restart. Why? If I restart, then might be my application users get disconnected, but because it changed the process number after restarting the process. I always prefer the reload. Impact hoga, guys? No, sir. Yes, sir. So that Yes, is sir. what they are looking. Understand? कभी भी देखो चीज छोटी है, बट उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं.
that you need to understand before executing the command. Clear? कमांड सीखना बहुत इजी है, उनको कब कहा कैसे इंप्लीमेंट करना है वो इम्पोर्टेंट. क्लियर? Yes, sir. बोलते हैं ना. ओके, प्लीज गो अहेड. देखो और एक एग्जांपल, जिंदगी जीना बहुत इजी है, राइट ना गाइस? कोई भी जी सकता है ना, बट वो किस तरीके से जी रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट ना. Yeah. Yes. वही यहाँ पे मतलब पता तो सब है ये करना है, बट कब कैसे उसके प्रॉस कॉन्स. थोड़ा केयर. देखो अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या, कभी गए आप क्लिनिक में, डॉक्टर ने आपको विदाउट एग्जामिनेशन आपको क्या सुला के इंजेक्शन दिया दिया क्या? वो केयर करता है, पहले बुलाता है, देखता है, पूछता है आपको ये कब हुआ, सुबह से क्या खाया था, रात में कुछ तकलीफ हुई थी क्या, आपको कोई एलर्जी है क्या, पहले वो डायग्नोसिस करता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो भी ट्रीटमेंट वो प्रोसेस होगी ना. क्या आ गया आप गए अस्पताल में, अरे इसको सुला दो, चलो चलो ये डोज चढ़ा दो, बस खत्म. ऐसा कभी हुआ है? यही हमें भी यहाँ पे करना है ना. Yes, sir. Yes. थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे आप उसे प्यार से देखोगे क्या क्या हुआ है क्या नहीं, फिर ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू टेक द एक्शन. क्लियर? तो यही हमें मेथड यूटिलाइज करना है लिनक्स एडमिन में, लिनक्स सिस्टम एडमिन में. और गाइस अगर आप ये टेक्निक सीख गए ना तो इंटरव्यू आप आराम से क्लियर करो. जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा उसको उसी तरह से आंसर. अगर किसी ने बोला आपको hey my system is not accessible, what you're going to do? Okay, if my system is not accessible, I will first try to ping that server if the server is reachable or not. If the server is not reachable, I will check the server console access and I will check in which stage my server is stuck. ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो उसको क्या लगेगा, अरे इसने काम किया है. और वो इंटरव्यू क्यों लेते हैं पता है? उनको सिर्फ यही देखना होता है कि आपने सच में काम किया है या नहीं किया है. क्लियर? Yes, sir. वो नॉलेज कितना. तो ये सारी चीजें होती है. ठीक है, तो चलो क्लियर हुआ आपको ये? तो रीलोड एंड स्टार्ट. क्लियर? Yes. चलो नाउ suppose guys my user ram is there, right? ram is already been. मुझे अगर कभी राम को किल करना है तो मैं यहाँ से प्रोसेस नंबर ढूंढने से अच्छा क्या करूंगा, पी किल राम, राइट ना? Yes, sir. पी किल राम कर दूंगा ना मैं सीधा. Yes, sir. पी किल राम still is not killing. So if I run the command here ps3 -p and ram, देखो राम कौन कौन सी प्रोसेस यूज कर रहा है दिख रहा है मुझे. देखो राम डैश की भी प्रोसेस यूज कर रहा था, अभी दिख रहा है गाइस. राम ने एसएसएच किया है तो मैं सीधा क्या करूंगा, डैश की प्रोसेस को ही किल कर दूंगा. किल -15 1298. अभी भी नहीं गया वो. यू सिंपली यूज किल Sir, kill -9, it is not work in Linux. kill -9 तुम Is it? करो. सी अंडरस्टैंड, इफ यू रन द किल so you are exactly using kill -9. Clear? Kill -9 is a sure shot killing. Yes, yes. You do not need to put that number. You simply use kill. Kill is also similar as a kill. Clear? Yes, yes. Okay. So yeah, this is clear, guys. We can simply use ps3. See, ps3 and the process name. See, ps3 -p and the username. You will get to know what are the process he has been utilizing. Yes, sir.
right? So simply use PS tree. अगर कभी if you are not able to find out, you want to know, you want to understand कि कोई user है guys, right? Suppose that user is already been left your organization and you want to know, you want to kill that process. So you need to first understand what are the process he has been utilizing, right? अगर कोई already application उसके चल रहे हैं, you can also check, right? Using the PS tree, right guys? That's all right. Even you can use the command pgrep minus l minus u root. तो देखो रूट मेरी कौन कौन सी प्रोसेस यूज कर रहा है ये मुझे बता रहा है. देखो रूट सिस्टम डी चला रहा है, ये सारे प्रोसेस मेरी रूट यूज कर रहा है. क्लियर गाइस? विथ प्रोसेस नंबर. क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. देखो पहले टेस्ट तो क्या है, आपको इतना कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक ही टॉप कमांड है. टॉप कमांड में सीपीयू रैम क्या है क्या नहीं यूटिलाइजेशन देखना है और उस हिसाब से आपको काम करना है. आप कभी आपके लाइफ में पी ग्रेप पी किल इतनी जरूरत ही नहीं आएगी. आपको अगर कभी स्टॉप भी करना है तो सिस्टम सीटीएल आपको टूल है, उससे हम आगे इसके आगे वही सीखने वाले. उस टूल को यूज करोगे, प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, स्टॉप करोगे, रिस्टार्ट करोगे, ये सारे काम आप करोगे. आपको जरूरत भी नहीं, बट यू नीड टू जस्ट यू विल यूज ओनली टॉप टूल. ओके, सो टॉप आपको यूज करना है. क्लियर गाइस? रिस्पॉन्स मी प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ टॉप आप यूज करोगे. ठीक है. नाउ सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट. इस पे मैं आपको नोट में सारा डाल दूंगा, उसमें मैं लिख दूंगा पीएस का मीनिंग क्या होता है, पीएस माइनस ये उसका मीनिंग क्या होता है. अगर मुझे रूट की प्रोसेस देखनी तो पीएस हाइपन कैपिटल यू रूट, तो मैं आपको उस डेफिनेशन से डाल दूंगा गाइस. यू नीड टू डू दैट असाइनमेंट. ओके ओके गाइस. Okay, sir. कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, क्लोज द प्रोसेस. कंट्रोल जेड का मतलब टू सस्पेंड द प्रोसेस. ये सारा मैं आपको नोट में डाल दूंगा, आपको सिर्फ उसका प्रैक्टिस करना है. क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so basically, guys, you need to understand now. So graceful killing and 9 is, suppose if I run the command kill minus L. तो देखो kill minus L कमांड करोगे ना तो इसे सारे सिग्नल दिखते हैं. देखो बट हम पूरे लिनक्स के करियर में दो ही सिग्नल यूज करते हैं. एक होता है kill minus 9 और एक होता है kill minus 15. अगर टर्मिनेट करना है तो 15 टर्मिनेट द प्रोसेस. 9 आपका डायरेक्टली किल होता है, सीक किल. ठीक है, तो ये हम दो ही नंबर ज्यादा यूज करते हैं पूरे इस करियर में. उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे देखा होगा टॉप में, यहाँ पे देखो पीआर. अब ये पीआर क्या होता है गाइस? प्रायोरिटी प्रोसेस. अब देखो यहाँ पे 20 नंबर है. देखो प्रायोरिटी का कैसे होता है? 20 नंबर मतलब लोअर वैल्यू प्लस 20 इज द लोअर वैल्यू एंड प्लस -20 is a higher value. +20 is the lower value और -20 is the higher value. मतलब कोई प्रोसेस है मेरी 20 से चल रही है, ठीक है, तो मतलब क्या है, लोअर प्रायोरिटी. बट -20 का प्रोसेस क्या होगा गाइस? हायर वैल्यू. Higher value. ओके. अगर सपोज कोई बैकअप है आपका, राइट, कोई बोल रहा है आपका, कोई आपको बोल रहा है कि अरे मेरा ना बैकअप जल्दी खत्म करना है, तो इसका प्रायोरिटी बदल दो ना. तो अगर आपने किया यहाँ पे कमांड मारा रिनाइज कमांड होता है उसका, रिनाइज -19. -19 क्या हो गया? हायर प्रायोरिटी हो गया, राइट. आप कोई भी दे सकते हो और 20 नंबर को आपने दे दिया. तो पहले वो 20 नंबर की प्रायोरिटी क्या थी गाइस? ओल्ड प्रायोरिटी वाज -20, न्यू प्रायोरिटी -19 दे दी. तो क्या होगा? ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा. तो गाइस इस तरह से आप, मैं सिस्टम डी को प्रायोरिटी नहीं चेंज कर सकता. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. सो बेसिकली to change the priority of any process, you use renize command. I can specify in that our in the notes guides. Okay, so basically you just understand what is the PR. PR is a priority, and you can change that number within the renize command. Okay, so these are the things, guys. Okay, and zombie process, clear guys? Zombie process क्या होता है? Yes, sir. Yes. राइट. डीजी मतलब आपका बैकग्राउंड प्रोसेस गाइस. सी अगर कोई प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी देखो गाइस, मैंने टॉप कमांड चलाया और मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ. कंट्रोल जेड करूंगा क्या होगा? देखो वो स्टॉप हो गया. स्टॉप
अब जब मैं कंट्रोल जेड करता हूं ना, तो वो क्या होता है गाइस, कंट्रोल जेड का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल जेड मतलब टू सस्पेंड द प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे बीजी कमांड मारू ना, बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड द प्रोसेस। अब देखो मेरा, जब मैंने उसको कंट्रोल जेड किया तो क्या चला गया? सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होके किधर चला गया? बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में फिर प्रोसेस नंबर क्या है? 1। अगर मैं इसको बीजी 1 करता हूं ना, तो अब 1 मिनट है, यहाँ पे मैं बीजी करता हूँ, बीजी, और मैं अगर इसको बोलूंगा बीजी 1, ये थोड़ा स्टॉप हो गया। तो आप कंट्रोल सी करूंगा तो ये सीधा टर्मिनेट होगा, सस्पेंड नहीं होगा। अगर मैं बीजी करूंगा तो देखो, किसी प्रोसेस को किल करने, किल 1, बीजी। तो बीजी मतलब गाइस बैकग्राउंड प्रोसेस। देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई फाइल कॉपी करनी है, cp-r, जैसे आपकी opt नाम की फाइल है, और ये आपको कहाँ पे डालनी है? टेम में। अगर यहाँ पे आपने लास्ट में n% लगा दिया, तो n% क्या करता है? इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में डाल देगा और आपको टर्मिनल खाली कर देगा काम करने के लिए। आर यू गेटिंग माय? बट दिस जो भी कॉपी का काम है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। क्लियर गाइस? Yes, sir. तो Yes, sir. 10% जब आपको पता होगा गाइस, n% लगाते हैं तो प्रोसेस बैकग्राउंड में चली जाती है ना? मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैं कुछ डेटा है मेरा, cp-r opt एक टेम में डालना चाहता हूँ। अब देखो, देखो अब ये जा रहा, अब मतलब आपको रुका दिया ना, you cannot do anything because your terminal busy. But guys, if I run the command, same command, I use n%, तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है, this running in background, right guys? If I run the command ps minus Yes, ef gray cp, this process is already running in background. Clear guys? Are you getting me? Yeah. Yes, sir. Right? And if you want to tell the process, clear guys, यही काम है। क्लियर? Got it, sir. ओके फाइन। सो मैं आपको ये बता दूंगा गाइस, मैं आपके नोट्स में पूरा डाल दूंगा। यू नीड टू डू द लैब, ओके, यू हैव टू डू द लैब, ओके। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। प्रोसेस इज वेरी इजी गाइस। प्रोसेस में आपको क्या समझना है? प्रोसेस में आपको समझना है कि पेरेंट प्रोसेस मतलब क्या, चाइल्ड प्रोसेस मतलब क्या, ज़ोंबी प्रोसेस मतलब क्या, सिस्टम प्रोसेस मतलब क्या, यूजर प्रोसेस मतलब क्या, डेमन प्रोसेस मतलब क्या, राइट। फिर बैकग्राउंड प्रोसेस मतलब क्या, किलिंग प्रोसेस में कौन कौन से है, श्योर शॉट किलिंग, ग्रेसफुल किलिंग, उसके बाद आपका सीपीयू रैम, ये प्रोसेस कैसे, वर्चुअल मेमोरी, आरएसएस मेमोरी, रिनाइस, प्रायोरिटी, ये सारी चीज प्रोसेस में आती है। और अभी इसके आगे का जो हम टूल सीख रहे हैं, सिस्टम सीटीएल, आप कभी इसको यूज ही नहीं करोगे। आप सीधा जब भी कोई प्रोसेस देखने तो आप सिस्टम सीटीएल यूज करोगे। मेनली गाइस वी विल ओनली यूज इन रियल टाइम टॉप कमांड। तो आपको अगर कभी इंटरव्यू में पूछा भी, हे for process related which command you are using, so you simply say I am only using the top tool, and top tool is sufficient to get all the detail. Clear guys? Clear? Yes or no? Yes, sir. प्रोसेस समझ में आ गया आपको? थोड़ा आइडिया आ गया प्रोसेस का? पहला प्रोसेस कौन सा है आपका? जब भी आप टर्न ऑन करते हो सिस्टम, आपको ये तो पहला प्रोसेस कौन सा चलता है आपका? System D. सिस्टम डी कौन चलाता है? कर्नल। हाँ, सिस्टम डी का नंबर क्या होता है? 1. कैसे? सिस्टम डी का नंबर क्या है? प्रोसेस सर नंबर 1 1. सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डेमन डी से। D. वेरी गुड, डी लगा से, बराबर। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड? What is the parent process? Sir, kernel is the parent process and system D. I'm just giving you example. Okay. Kernel is a parent process and system D would be child.
नहीं, ये गिव मी द सिंपल डेफिनेशन, आपको क्या समझ में आए? व्हाट इज अ पेरेंट प्रोसेस? देखो, ऑल द प्रोसेस जो भी है किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। Yes, sir. एंड दे आर क्रिएटेड व्हेन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूट। ओके, एंड दिस द प्रोसेस जो भी सिस्टम कॉल करती है, सो ये सारे के सारे पहले क्या होते हैं? आपके पेरेंट प्रोसेस होती है। एंड द पेरेंट प्रोसेस इज वन दैट क्रिएट अ parent process is one that creates a Child. child process. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically guys, you need to just understand this, the process things आपको थोड़ा understand करना होगा. I can give the notes and all. I am preparing the note. मैं आपको यहाँ पे पूरा definition वगैरह यहाँ पे पूरा डाल दूंगा. You just need to do the practice. And as I said, you use man, peers, ये कमांड आपको इसका पूरा study करना है. Clear guys? Yes, sir. मैन पीएस का, ठीक है, मैं आपको ये पूरा प्रिपेयर बना के शाम तक भेज दूंगा, ठीक है। चलो, लेट्स गो बैक टू नाउ गाइस, कैन वी टेक 5 minute ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट विद द सिस्टम सीटीएल, ओके? Okay, sir. Okay, sir.
Okay, so let's start. Fine. Okay, done. Fine. So let's understand, guys. Now, सिस्टम CTL अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी प्रोसेस को स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं, राइट? किसी को रिस्टार्ट कैसे करते हैं, यू नो द सिस्टम CTL टूल, बट आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट. ओके, सो लेट्स ओके, सो कंट्रोलिंग द प्रोसेस एंड डेमन, इट्स वेरी इजी गाइस. ओके, कैसे प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करना है. एम ऑडिबल गाइस? रिस्पॉन्स मी. Yes, sir. Yes, sir. Controlling the process and daemon. सिंपल है गाइस, एक ही टूल है. जैसे कोई प्रोसेस है, प्रोसेस नेम है, जैसे कि प्रोसेस नेम है मेरा, प्रोसेस नेम क्या है, इसका प्रोसेस का नाम HTTPD. ठीक है, अगर इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट द प्रोसेस, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD. ये क्या कर रहा है गाइस? टू स्टार्ट द प्रोसेस. स्टॉप करना है, सिस्टम CTL स्टॉप HTTPD. ये क्या कर रहा है? स्टॉप द प्रोसेस. इसको मान लो, सपोज इफ यू वांट टू disable the process, or if you want to enable the process, or if you want to restart the process. So let's understand first restart. System CTL restart HTTPD. ये क्या कर रहा है? It is restarting the process. System CTL reload HTTPD. ये क्या कर रहा है guys? Reloading the process. System CTL disable HTTPD. क्या कर रहा है गाइस? डिसेबलिंग द प्रोसेस. मैं बताता हूँ आपको इसका पूरा. ओके, डिसेबलिंग सिस्टम CTL इनेबल HTTPD. इनेबलिंग द प्रोसेस. चलो अब थोड़ा अंडरस्टैंड करो. जब इफ यू रन द कमांड सिस्टम CTL स्टार्ट द प्रोसेस, तो अगर कोई बंद प्रोसेस होगा तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा. If the process is running and if you run the command system to stop this, what will happen? That process is going to be stopped. If you want to, the process has already been running, but you know, let's say the process is already been running, but इस process में कुछ file थी, process is already running, and let's say there is a process, there is a file. उस file में आपने कुछ modification किया उस file में. Now the process has to read this file. So in order to read this file, you need to do the restart. But if you restart the process, क्या होगा? Your PID will be changed. Response me. Your PID, process ID, will be changed. Guys, response me. Yes, sir. Yes, sir. So reload the process. क्या होगा? PID will be same. Very good. PID won't be changed, or PID will remain the same. But if you disable the HTTPD, देखो आप थोड़ा understand करो. Suppose server is already running. And what you did? Your process is running. See, understand. जो आपका HTTPD का process है ना, is running. But you have disabled that. अंडरस्टैंड. क्या होगा? प्रोसेस तो चल रहा है, बट इसका डिसेबल्ड है, मतलब अभी टेम्पररी रन कर रहा है. टेम्पररी इज रनिंग. अंडरस्टैंड गाइस? टेम्पररी इज रनिंग, बट ये डिसेबल पैरामीटर आपने ऐड कर दिया है. ये इम्पैक्ट व्हेन इट विल गेट इम्पैक्टेड. सपोज आपने सर्वर को रिबूट किया, और रिबूट करने के बाद सर्वर अप आया, तो सर्वर जब अप आएगा ना, तो आपकी HTTPD क्या रहेगी? स्टॉप हो सकते रनिंग पे नहीं. तो आप क्योंकि आपका स्टेटस क्या है? डिजेबल है. डिसेबल. तो डिसेबल का ड्रॉबैक तब होगा जब आप सर्वर रिबूट करोगे और सर्वर अप करोगे, तो हमेशा स्टॉप आएगी. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए सर समझा नहीं. बताता हूँ. डोंट वरी. देखो सिंपल सी बात है. देखो, अगर
आपका प्रोसेस रनिंग में है अभी, बराबर? मैं आपको बता दूं, डोंट वरी। सिस्टम सीटीएल, स्टेटस, एचटीटीपी, मेरा प्रोसेस चल रहा है, Yes, sir. बट प्रोसेस का स्टेटस क्या है? इनेबल है क्या डिसेबल? अब मुझे चेक करना है। अगर इफ आई रन द कमांड सिस्टम सीटीएल, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, सिस्टम सीटीएल इज Status. इनेबल्ड एचटीटीपीडी, क्या बोल रहा है? Disabled. ये डिसेबल है भाई, ये डिसेबल है। बट इस सर्वर को अगर मैं रिबूट करूंगा तो सर्वर जब अप आएगा तब वो सर्विस मेरी स्टॉप में रहेगी या स्टार्ट में रहेगी? Stop it. Stop. स्टॉप। क्यों? क्योंकि Stop. डिसेबल Disabled. है। मतलब सर्वर जब ब्रिंग अप होगा तो वो सर्विस ऑटोमेटिक अपनी आएगी। आर यू गेटिंग नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ऑटोमेटिक अपनी आएगी। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में डिसेबल करके रखा है ना। तो आपको हमेशा क्या करना होगा? उसको We need to enable it whenever we want to use it. इनेबल। और अगर आप पूछोगे इसको क्वेश्चन तो अभी क्या है आपकी प्रोसेस? Enable. तो आपका सर्वर रिबूट भी होता है तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आ सकते Yes, हैं। Yes. आएगा ही। ओके, सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सपोज इफ आई हैव द सर्वर, okay, if I just log in the server and if I run the command system ctl status httpd, sorry, just understand ना, system ctl start httpd, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका मैं स्टेटस देख लेता हूँ। चल रहा है गाइस? रिस्पॉन्स मी। Sir. Yes, sir. सिस्टम ctl is enable httpd, क्या है गाइस? एक मिनट, इनेबल्ड क्या है? Disable the system. Disabled है. इसको मैं रिबूट कर रहा Disable. हूँ, इसको मैं रिबूट कर रहा हूँ। If I run the command root red hat systemctl status httpd, क्या है गाइस? Services is not running. मतलब क्या समझे आपको बताओ? क्योंकि it's already been disabled and the moment I start it's automatically didn't come up, right? Yes, sir. But if I run the command systemctl enabled httpd, systemctl is enable httpd, HTTP. it's saying yes. Or if I run the command systemctl start httpd, suppose your application is running now, your application is running and some due to unfortunate reason your server reboot at midnight automatically, and when the server comes up
Now clear? Yes, sir. Yes, sir. So let's consider that, guys. So suppose as a Linux engineer, due to, you are not aware about your service is in disable mode or not. And what happened, your application is running. And one day around morning 2 a.m., your server, due to heavy load, server got rebooted. And no one is there in this shift, right? Your fixed timing is morning 8 to morning 9 to evening 6. And this happened around early morning 2 a.m. In that case, what happened if the service is in the disabled state? So what happened, guys? If the server comes up, but your service didn't bring up. So till 9 a.m. Until you reach in the office, till that time your application will be stopped. Clear, guys? Yes, sir. So always make sure that your service should be enabled state. Clear? Clear? Yes, sir. So suppose Yes, in sir. interview, suppose if they ask the question, then my application didn't come up. Means earlier it was running and after reboot, my application service didn't come up. What would be your answer? I need to make sure if the service status is enabled or disabled. First, I need to verify that. That might be a cause, right? Response me. Yes, sir. थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कहीं? क्यों हमें अगर गलती से भी आपका सर्वर रिबूट भी हो जाता है तो मेरी सर्विस ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए आप. Yes. ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लगता है आपको इंपॉर्टेंट है इनेबल डिसेबल? Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस, फाइन. नाउ अंडरस्टैंड. बट अगर किसी ने गलती से डिसेबल किया तो आपको वो भी नहीं होने देना है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू नीड टू ऑलवेज पुट द मास्क. अगर if my service, if I put the mask here, system ctl mask httpd, now nobody is going to change my service status. If I try system ctl disable httpd, it won't happen. क्या बता रहा है? Ignoring. Clear. So for protecting, what you're going to do, if someone Mask. does not change, you always put. Google mask. And if you want to remove this mask, simple, guys, mask पे क्या लगाओ? Unmask. Clear? Now if you to disable, Yes, sir. you can disable. Clear, guys? Is it interesting? Yeah, got it, sir. Got it. You always remember, you make sure that you put the mask so nobody going to change your service status. Clear, guys? So what you learn? Start, stop, restart, reload, enable, disable, and mask. Any doubts? Any doubts? No doubt, sir. No, sir. Good. Now, guys, कभी देखा है क्या आपने? Means suppose if you start your system, right? So let me show you. Guys, आपकी concept clear होना बहुत जरूरी है. You need to clear your concept. ताकि ये command Google पे मिल जाती है, उसका छोड़. Suppose if I log into server 192.168.0.45. देखो, मैं जब भी यहाँ पे रूट कमांड मारता हूँ ना, देखो मुझे कुछ नहीं आता है और मेरा डायरेक्टली ये होता, देखो यहाँ पे आया, हे वेलकम लिनक्स, वेलकम टू लिनक्स. तो देखो एक रियल टाइम में क्या होता है ना, एक मैसेज डालते हो में, उसको बोलते हैं एमओटीडी मैसेज. एमओटीडी मैसेज. और ऐसा अलर्ट आता है ना गाइस, बैनर वाला सर, बैनर मैसेज. बैनर भी लगा सकते हैं हम, राइट. ओएस बैनर मैसेज.
ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो इस तरह से मैसेज है गाइस जब भी आप सिस्टम Right. इन करते हो आर यू गेटिंग Right. Yes, yes. अब ये कहाँ पे डालते बताओ ETC MOTD E- देखो मैं आपको बताता हूँ okay? Yeah, I want that. Okay. MOTD message. Okay. So suppose if you want to be advised, or you are accessing or restricted system. Okay. Suppose if you want to put this message, what I'm going to be slash MOTD, and you simply remove this, and you simply put the message here. You are accessing or restricted system. Okay, I save this file, and if I exit, guys, and if I try to log in the same server, I just need to understand the IP 0.45 192.168 0. Can you get this? Hello. Yes, sir. Sir, Yes, sir. Yes, sir. So basically, guys, this kind of message in real time, if you log into any system, so you will see the first message. It will say that, so whatever you are doing, it's everything is recording. Okay, so be alert. Such message it would come when you log into the system. For just for alert, so you need to be very you take so much caution, right? Doing anything on the server, right? So yes, this type of message we can put in banner. Clear, guys? And what is the command that ETC MOTD? मैं आपको टेक्स्ट में दे दूंगा, नोटपैड में सब कुछ डाल दूंगा. ओके, उसका टेंशन मत लो. बट ये क्लियर हुआ? yes. Yes, sir. Okay. So this banner message, you can also try, guys. You can also try this banner message. Okay, fine. Now, so suppose you need to understand more now. So, या तक clear, guys? या तक किसी को कोई doubts? या तक doubts कुछ? सब clear है? No, sir. Yeah. सब perfect समझ में आ गया सबको? हाँ सर. चलो. Yes, sir. अब थोड़ा सा आगे जाते हो, okay? थोड़ा सा. अब देखो, जैसे कि मैं आपको पूरा रियल टाइम में समझाता हूँ अभी. रियल टाइम में क्या होता है गाइस, आपके जो सर्वर होते हैं ना, सर्वर्स, वो एक तो क्लाउड पे होंगे. क्लाउड मतलब क्या, आपका AWS होगा, अजूर होगा, या GCP पे होगा. अभी 3 ही एग्जांपल ले लो. या आपका ऑन प्राइम पे होगा. ऑन प्राइम मतलब क्या, कंपनी का खुद का बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर आपके सर्वर रखे हैं. Data center. डेटा सेंटर बोलो आप उसको, ठीक है, डेटा सेंटर, और उनके अंदर आपके सर्वर है. और ये आपका डेटा सेंटर समझ लो बैंगलोर में है. ये डेटा सेंटर currently in Bangalore. Fine. And your team is sitting in Pune location. So what they are going to do? So जैसे कि उनका सर्वर्स यहाँ पे उनको लैपटॉप दिए गए हैं, and obviously guys they already get access over the internet. Okay, fine.
So guys, you know the server inventory. So आपको एक इन्वेंट्री मिलेगा, सर्वर इन्वेंट्री. तो जैसे आपके सर्वर के नाम है सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, और आपके पास एक इन्वेंट्री होगा एक्सेल में, एक्सेल फाइल. मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ. आपका प्रोजेक्ट है, उसमें एक्सेल शीट में आपको डिटेल मिलता है. जैसे उन्होंने बोला कि ये सर्वर ये है ना, इसका जो आईपी है 192.168.0. समथिंग कुछ तो दिया है आपको. तो ऐसे सबका दिया है, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी. ठीक है. तो एवरीडे आप क्या करोगे, आप पहले आओगे, आपके लॉग इन करोगे आपके लैपटॉप पे, राइट. यू लॉग इन विथ योर लैपटॉप, राइट. यू लॉग इन विथ योर लैपटॉप एंड since you need to work with, you need to access the server. आप क्या करोगे, पहले ओपन क्या करोगे, पुटी, राइट ना गाइस, या मोबाइल स्ट्रीम, राइट. Yes. प्लीज. और उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, सर्वर का आईपी डालोगे एंड पासवर्ड डालोगे. जैसे आप डालोगे गाइस, आप क्या हो जाओगे, सर्वर पे कनेक्ट. क्लियर, रिस्पॉन्स मी. Yes, sir. Yes, sir. अब ये कनेक्ट होने के लिए ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कनेक्ट होता है ना, ये किसी प्रोटोकॉल से कनेक्ट होता है. तो पहला प्रोटोकॉल में बताता हूँ आपको, टेलनेट. तो यू नो इन अर्ली डेज वी विल यूज द टेलनेट प्रोटोकॉल. So telnet is a protocol, guys, to connect the remote system. But if you go with the telnet session, guys, please go on mute. This session is not secure session. Why? So the moment you run the command, guys, the moment you run the command telnet and IP, and after assigning after specifying the IP, thereafter you need to supply the password, and obviously you will get connect. But what is the drawback here? So suppose, guys, if you are connecting with the telnet session, and so whatever you are transmitting, or whatever you are this is a transmission line, right? So whatever you are transferring the information to the server, let's say you are transferring the information ABC. You're transferring the information hello. You are sending the packet hello. You are sending the file, or you are sending the file, and inside the file there is a hello word. So obviously, whatever the transmission is happening, this happening in the plain text format. Okay, so between this from your source to destination, if there is any mission, or if there is a hackers, and if they hack the data, they would receive the data in the plain text format. Are you getting me? They would receive the data in the plain text format. So obviously they would they would hack your actual data. Are you getting me? Yes, sir. Yeah. So They can guys, manipulate. yeah, so basically in real time, we never ever use telnet. Why? Because telnet is not secure. Clear? Response me, please. Got it, sir. And guys, and even if you check your real-time system, telnet port is already been blocked. You cannot use telnet. If you try to run the command telnet command, it won't get executed. If the command is executed, then obviously even the port will be blocked. In real time, nobody will allow you to use the telnet, because telnet is not secure. If the ask you the question in real time, hey, do you use the telnet to connect your remote system? Always say no, I can't use telnet because telnet is not secure. What is the drawback if I use the telnet? If you are transferring any data, or if you are accessing the server, if you are transmission anything, all the data will be transferring in actual format, and that is too not secure. Clear? Clear? Yes. So instead of the telnet, which protocol we must use? So instead of telnet, we always use, guys, as don't red, it should be green, SSH. Clear, guys? Yes. The port number of the SSH, 22. Clear, guys? Yes, sir. And what is the port number of the telnet? Telnet port number is 23.
So please understand here. So guys, let's consider, okay, support, which is very important. So I'm going to explain you here. So suppose if you are transferring, or if the transmission happen with your SSH with source with your destination, the data data will be flowing encrypted format. So that means if you want to transfer the content like hello, so this content will get encrypted during the transmission. So the content would be like this. In hello would be like this. And suppose if there is any hacker between source in destination, if there is any hacker in mid of this transmission, and if you hack your data, he would get the data, but data would be in encrypted format, and he never decrypt that data. That means, yes, there is no risk, right, guys? He would never decrypt the data. Clear? So that is what we always prefer, only SSH. Clear, guys? Yes. So in SSH, the data transmission happen in encrypted manner. Okay, so please understand this one. And even guys, okay. So this is clear. Yes. Yes, sir, clear. Okay, fine. So let me tell you one thing now. So now we'll talk on SSH. So SSH stand for secure shell. It transfer the data encrypted manner. Okay, just transfer the data in encrypted manner. Okay, so let me show you guys. Don't worry. Suppose I have a server. I'll take two servers now. Oh, so I'll just name here master, hostname CTL, set hostname master, and I'm just doing bash. So this is my master server, and I need one more client, right? So I'm just getting one client. Okay, so this is already client name is client. I just need to IP. What is the IP? 0.12. So okay, just understand guys. So मैं क्या करता हूँ, दो सर्वर बनाता हूँ, एक मास्टर एक क्लाइंट, तो आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा. ये आपका मास्टर है और ये क्लाइंट. अरे मैं इसका ना ये भी चेंज कर देता हूँ कलर, तो आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएगा.
चलो देखो, ये आपका क्लाइंट है और ये आपका मास्टर है। क्लियर गाइस? अब देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। अब मुझे क्लाइंट को, अब देखो ये मेरा कौन सा सर्वर है? मास्टर। अब इसका आईपी क्या है मास्टर का गाइस? इफ कॉन्फिग -a चलाओ, क्या आईपी इसका? 0.45 हाँ, और इसका क्लाइंट का आईपी क्या है? 0.12 हाँ, चलो पहले आपका क्लाइंट रीचेबल है क्या नहीं मास्टर से कैसे चेक करोगे? पिंग कमांड चलाओगे। Ping stand for packet internet dropper. So you need to first make, before connecting any server, you always ensure that if the server is reachable or not from your location. So basically, if I want to check, I will just check. I need to know of the remote server IP address first. So I'm putting my remote server IP here, 192.168 and 0.12, and I'm getting the response. Are you getting, guys? Yes, sir. I'm Yes. getting the response. But guys, if I specify the wrong IP, which is not available in my network, then I would not able to connect. it is not pinging. It says that destination, because there is no such host in my network, right? The response me. Now, so I check, then, so this clear, guys? So if you get the response, that means your server is alive from your location. Yeah. Yes. Yes. Okay. Now, suppose if you want to connect the server from your source system, you always use SSH. SSH, you're creating the secure shell between your server to remote server. So SSH, but which user you want to log in with that remote server? So I want to log in with that remote server with the root user. So this is my root is my remote server. That means root, I'm utilizing my client root. Clear, guys? Yes, sir. At the rate, and what is my client IP? 12. 192, 168, 0.12. 0.12. Okay, I got connected successfully without asking me the password. Why? That I'm going to tell you later, because this is existing configuration. I'm deleting everything. So please understand. Right now, I am already directly connected with my client system. If I run the command ifconfig -a, you will get to know that you are already been connected 0.12. Clear, guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now I am just giving the exit command here, and now I am again back to my master server. Clear, guys? I'm on master server. Now, please understand, this SSH configuration will be stored in .ssh directory. So if you run the command pwd, you are in root, and if you run the command ls-a, you will find, 1 minute, guys. If you run the command cd.ssh, this directory is there. So if I s-l Slash etc. dot ssh, sorry, Sir, SSHD directory is in slash etc SSH, not right? नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उस पे जंप मत करो प्लीज। Okay. डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ। जस्ट जो भी है अनलर्न, जो भी सीखा है उसको पहले अनलर्न कर लो, और यहाँ पे वी विल सी। ओके, Sure, sir. फाइन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा SSH डायरेक्टरी है ना, ये कहाँ पे होता है? मेरा रूट के अंदर है। देखो, ls-la.ssh नाम का डायरेक्टरी ऑलरेडी बना है। इधर भी जाओ, ls-la.ssh ऑलरेडी बना है, राइट गाइस? Yes, sir. मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, rm-rf.sh कुछ नहीं है गाइस, SSH का सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दिया मैंने। रिस्पॉन्स मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब थोड़ा देखो, जब if I want to connect my remote server, I must know the remote server IP address.
Okay, so I have my remote server IP 0.12 and I am connecting my remote server username and username I have been utilizing root. जैसे मैं इंटर मारूंगा गाइस, क्या बोल रहे हो? Hey Rahul, you are connecting the remote server 0.12. So first you need to save the fingerprint. इसका जो क्लाइंट का फिंगरप्रिंट है वो मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ? मास्टर पे. क्लियर गाइस? रिस्पॉन्स मी. Yes, sir. क्लाइंट का जो फिंगरप्रिंट है वो मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ? Client, sir. मास्टर पे. मास्टर पे. अरे बाबा, Yes, ये sir. क्लाइंट का जो फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट किसका है? मास्टर का है, क्लाइंट का है? किसका है? क्लाइंट का. जब मैं एस करूंगा तो ये कहाँ पे से होगा? मास्टर पे. मास्टर पे. ओके, 1 मिनट, आपको मैं बताता हूँ पहले. जैसे मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ तो गाइस यू कनेक्टेड डायरेक्टली टू द क्लाइंट. क्लियर? रिस्पॉन्स मी. Yes, sir. यस सर. चलो अब सोचो थोड़ा. 1 मिनट, मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ और मैंने डॉट एसएसएच डायरेक्ट डिलीट कर दिया था आपके सामने. फिर से मैं देखता हूँ ls-la.ssh आ गया गाइस Yes, sir. Yes, sir. ऑटोमेटिकली. चलो इधर जाओ क्लाइंट के साइड पे और देखो ls-la.ssh यहाँ पे नहीं आया. ठीक है, अब देखो, अब ये जो नोन होस्ट फाइल है इसको पढ़ो, इसको कैट करके देखो. ये जो 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, pwd कैट, पहले मुझे डॉट ना, फिर वो नोन होस्ट आएगा, राइट. इसमें क्या है गाइस? इसमें मेरे क्लाइंट का फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट. क्लियर गाइस? जो भी फिंगरप्रिंट था वो यहाँ पे सेव हो गया. मतलब आपके क्लाइंट का फिंगरप्रिंट आपके मास्टर सर्वर पे सेव हो गया. और वो कौन सी फाइल में सेव होता है? नोन होस्ट फाइल में. Non-host. देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, कंफ्यूज मत हो रहा है यार. ये आपका मास्टर सर्वर है, ये आपका क्लाइंट सर्वर है. ये आपका क्लाइंट सर्वर है. जब भी मैं इफ आई कनेक्ट माय क्लाइंट यूजिंग SSH प्रोटोकॉल टू माय क्लाइंट सर्वर, my server try to get connect to my client server, but the moment it gets connect, it fetch the client fingerprint print to my known host file. Are you getting now? Are you getting? Yes, sir. Now, understand. Up, if I try to connect second time, see, if I try to connect second time, it won't ask me to save the fingerprint. Did it ask me to save the fingerprint? No, sir. Why? Because fingerprint already been saved in non-host file. Clear? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. If I delete this fingerprint, and if I try to connect again it is asking response. Yeah, it's Yes, sir. Yes. Now it is clear. Yes, sir. Yes, sir. So if you just again check cat.ssh and known host, you can see the fingerprint. Clear, guys? Yes, sir. Okay, so basically the moment you connect the first time your client server, then my main source server always fetch the fingerprint of my client server. Clear? Or remote server.
Clear? Yes, sir. And Clear. fingerprint always be saved in your known host file. Clear, guys? Yes, sir. Good. Now, but इससे benefit क्या होगा? अगर suppose tomorrow if someone change the remote server, and if someone configure the same IP address, still you can easily identify. Why? Because again it will ask you the fingerprint and you would get the suspect. अरे fingerprint तो already से होता है, फिर से क्यों पूछ रहा है? Clear, guys? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay. So that is the benefit. Fine. Now, जब भी आपका फिंगरप्रिंट कहाँ पे सेव होता है? SSH के अंदर, नोन होस्ट फाइल के अंदर. देखो, आप सर्वर को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो. There are two methods. There are two methods to access the server. One method is password based authentication, and second method is जो आपने AWS पे करते हो. कौन सा है वो? की बेस. समझ में आया? AWS पे क्या करते हो आप? डायरेक्ट पासवर्ड से लॉगिन करते हो? Yes. करते हो? No, 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 sir. sir. तो कौन सा मेथड है उसको? Keep here. Public. की बेस ऑथेंटिकेशन. एंड ऐसे नॉर्मली आप जो सर्वर पे करते हो उसको बोलते हैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन. नाउ guys, please understand, you never find that password based authentication, guys. Yeah, but you always find the key based authentication, because key based authentication is very, very secure. If there is a key based authentication, then there is no one going to spoil anything. Okay, so that is what key based authentication is very important. Perhaps sometime you can find the password based authentication as well, but for that you need to modify something that I'm going to teach you. Okay, perhaps. Okay, now just understand. So first we need to understand password based authentication. Everybody knows that password based authentication karte hum. Okay, but which is a more secure? More secure is the key based authentication. Now guys, please understand. Suppose my two servers are there. I want to set here key based authentication. तो पहले आपको क्या करना होगा? You need to generate the key on your master server, and after generating that key, thereafter you can transfer that key to your client server. Clear, guys? Response me. So what you need to do first? Yes. You need to generate the key, right? So how to generate the key? So there is a command called SSH. I'm executing this command on server. SSH hyphen region. Enter. It says that generating public and private RSA key pair, and this key will be saved under root.ssh under ID RSA folder. Clear, guys? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, so what is this enter fast press? Just ignore this time. I'm going to explain it later. And you need to enter. The moment execute this, you need to find your key in the .s folder. There is a two. One is ID RSA. It has your private key. ID RSA pub. It has your public key, and non-host it has your fingerprint. Clear, guys? Yes, sir. Okay. Now, guys, you need to transfer or send this key, right? So how you are transferring this key? So there is a command called
what is this command? I not recalling now. SSH copy ID. Yeah. SSH copy ID is the command. SSH copy ID. Server IP. What is my client server IP? 0.12. But how I am logging with that server? With root user. Root @ IP 192.168.0.12 and password of your remote server. Clear, guys? Response me, please. Yes, sir. Yes, sir. पहले यहाँ पे हमने देखा ऐसे डायरेक्टरी बना था आपका यहाँ पे नहीं, राइट? नहीं. Same if I do ls-al dot ssh, directory is created automatically. And Yes, if you sir. here authorized key file, and this authorized key file, 1 minute guys, that dot ssh and authorized, it has your key. Clear, guys? Response me, please. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो की बना के मैंने बनाया वो मैंने कहाँ पे सेंड कर दिया? कहाँ पे सेंड किया? क्लाइंट पे. तो नेक्स्ट टाइम जब रिमोट सर्वर बोलो या आपका एक क्लाइंट सर्वर है ना, यहाँ पे लिखा भी. Yes, sir. आप Client. नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू कनेक्ट द सर्वर फ्रॉम मास्टर SSH 192 और SSH root @192.168.0.12. It won't ask you the password. Clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर. तो इसका आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे. इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. एनी डाउट्स? विजय कुमार, No, sir. श्रेयस, रामेश्वर, कौस्तुभ, चेतन, sir. भाग्यश्री, Yes, sir. कल्पना, No, sir. सब क्लियर. तो गाइस इंटरेस्ट आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ाई करना होगा या नहीं करना होगा? पढ़ाई करना होगा गाइस, राइट? यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Okay, sir. कंसेप्ट क्लियर हो रही है Yes. Yes, sir. गाइस? कंसेप्ट क्लियर करो. मैं आपको ये पूरा मटेरियल है ना आज का जो पढ़ाया मैंने वो नोटपैड में उसमें पूरा बना के भेज देता हूँ. ठीक है, इवनिंग तक. ठीक है, ठीक है. जो भी प्रोसेस वगैरह पढ़ा. ठीक है guys, तो रुकते हैं फिर यहाँ पे, कल मिलते हैं. ओके. और हाँ, ठीक है. प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू नीड टू गो थ्रू योर प्रीवियस रिकॉर्डिंग Yes, sir, I will. Yes. Yes. We will, and sir. don't watch movies. Yes, sir. Instead of that, please watch the recordings. Okay. Okay. Okay, sir. Bye. Okay.